गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इकोनॉमी के लिए जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का नियर द बॉर्डर, चाइना बॉर्डर खासकर, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है पहले तो वो देख लेते हैं हम। तो यूनियन बजट 2022-2023 में इसको अनाउंस किया गया था। कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स विलेजेस में। तो बेसिकली चाइना बॉर्डर पर। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डायरेक्ट टू होम फैसिलिटी देनी है, दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनल्स की, रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी है, लाइवलीहुड जनरेशन करनी है। तो ये सारा जो है प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर ही आता है। 4800 करोड़ रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंस किए हैं अगले जो है 4 साल के लिए। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन अब इसको पीएम गति शक्ति के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा ताकि ओवरऑल जो है 16 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ठीक से काम किया जा सके। पीएम गति शक्ति जो है 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसके लिए। 16 मिनिस्ट्रीज़ इसके साथ ऑन बोर्ड की गई हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा सकें। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। सी लैंड आपके सी ट्रांसपोर्ट जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, रोड, सारे जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देने का प्रोजेक्ट है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का प्रोजेक्ट है ताकि ट्रैवल टाइम जो है लोगों का रिड्यूस किया जा सके। 100 लाख करोड़ तक के नेशनल मास्टर प्लान इसमें बनाया जा चुका है, जिसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है जो हैं, 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और 109 फार्मा क्लस्टर्स जो हैं वो 2024-25 के पीरियड तक बनाने हैं। अब टारगेट इसमें अभी तक 2024-25 तक के हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के लिए। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल नेटवर्किंग ग्रुप, जो कि ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्वामित्व स्कीम। ये टॉपिक भी आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 55 लाख घरौनी जो है रूरल हाउस रिकॉर्ड्स वो स्वामित्व स्कीम के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। स्वामित्व स्कीम है क्या? अ सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व का ये जो है पूरा मीनिंग है। इसको जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह जो है लॉन्च किया गया था 2021 में, ओनरशिप देने के लिए रूरल इनहेबिटेड विलेजेस में लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए बाय मैपिंग लैंड पार्सल्स ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं, जिसको घरौनी कहा जा रहा है, वहाँ पर वो दिए जा रहे हैं लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर इसको प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 6.62 लाख विलेजेस कवर हो चुके हैं। फुल कवरेज जो है वो की जा रही है इसमें इंडिया के। और एक एक्सटेंसिव CORS नेटवर्क बनाया जाएगा 567 CORS स्टेशंस के साथ। अब ये CORS क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, ये बेसिकली रीजनल पोजीशनिंग सर्विसेज देने के लिए बनाए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई भी करेक्शन आती है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है गलत है, तो उससे क्लोजली जो लोकेटेड जो भी आपका CORS होगा वो इमिडिएटली जो है उसकी एक्यूरेट पोजीशनिंग जो है वो करके देगा। तो बेसिकली आपके जो है रीजनल पोजीशनिंग सर्विसेज देने के लिए जो है ये CORS नेटवर्क स्वामित्व स्कीम के अंदर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन कावेरी। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है सूडान से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये बेसिकली इंडियन सिटीजन्स जो स्ट्रैंडेड हैं सूडान में, उनको इवैक्यूएट करने का प्रोग्राम है। लगभग 4000 जो है सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जाएगा 2C-130 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए। नेवी शिप INS सुमेधा जो है वहाँ पर स्टैंड बाय पर है। और इवैक्यूएशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है वो आनी है, मतलब आनी थी रादर। एक ऑटोक्रेट उमर बशीर के बाद आर्मी रूल वहाँ शुरू हुआ, लेकिन अब इंटरनेशनली बैक्ड प्लान ये था कि वहाँ पर एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाई जाए। बट आर्मी और ये सिविलियन गवर्नमेंट एक दूसरे को अक्यूज़ कर रहे हैं कि आप ये दोनों ही फाइट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है ये कन्फ्लिक्ट एमर्ज हुआ है। अब सूडान जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है। खार्तूम वहाँ की कैपिटल है। अरेबिक वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप वहाँ पर लेक विक्टोरिया और
जो है जहाँ से नाइल निकलती है वो देख कर जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। और वहाँ के आसपास की कंट्रीज़ जो है अ, जो मैप में आपको देखने को मिलेंगी वो आप उसको ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएल पिन। ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रिसेंटली कहा है कि यूएल पीएन जो है वो लगभग 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने अभी तक अडॉप्ट कर लिया है। यूएल पीएन है क्या? तो यूएल पीएन जो है आपके यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का ही पार्ट है। इसको हम भू आधार भी कह रहे हैं, मतलब 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है हर लैंड पार्सल को। हर सर्वेड लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि लैंड फ्रॉड को रोका जा सके। जब एक बार आपके लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन हो जाएगी तो कोई जो है उस पर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बेस्ड जो है वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर डिटेल को कंपाइल किया जा रहा है। एक सिंगल अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाया जाएगा लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनके लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। अब ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही है। तो हर तरह का डेटा, चाहे वो बैंक से मिले, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिले, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मिले या किसी भी सेक्टर से मिले, उनको बेसिकली डिजिटाइज किया जा रहा है और सर्वे करके उस डेटा को जो है वो कंफर्म किया जा रहा है। अब एक बार सोचो अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ऑफ कोर्स जो कन्फ्लिक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनको छोड़ देते हैं हम भी, तो आने वाले टाइम में जो है लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि जब एक बार डेटा डिजिटाइज हो गया, ओनरशिप को एस्टेब्लिश कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं इससे ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज इनियोकोस 223। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक्सरसाइज इनियोकोस 23 में पार्टिसिपेट करेंगे ग्रीस में। ये एनुअल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो हेलेनिक एयरफोर्स, मतलब ग्रीस की एयरफोर्स जो है वो होस्ट करती है। सिंगल बेस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब सिर्फ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही एयरबेस पर होती है, अंद्राविदा एयरबेस जो कि ग्रीस में है। रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। यूएस, फ्रांस, इटली, इंडिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक इंजेक्टेबल सेल थेरेपी डेवलप की है जिससे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। तो ये एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़ है जो बहुत से टिश्यूज़ जो है जॉइंट के उसको इफ़ेक्ट करती है। तो बेसिकली जो कार्टिलेज जो आपके जॉइंट्स को कनेक्ट करती है, कुशन देती है, वो वेयर डाउन होने लग जाती है ओवर टाइम। और ये आपके सिर्फ नीज़ में ही नहीं बल्कि हैंड्स में, हिप्स में, स्पाइन में कहीं भी हो सकता है। धीरे धीरे ये डेवलप होता है जब से जैसे लोग एज होते हैं, और पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है, टेंडरनेस, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आता है इससे। कोई क्योर नहीं है इसका, बट जो है पेन की मैनेजमेंट लास्ट में जो है ओवर टाइम की जाती है, और लास्ट में जब अगर कोई ऑप्शन ना बचे तो ऑफ कोर्स जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इको बायो ट्रैप्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बीएमसी जो है मुंबई के, उन्होंने डिसाइड किया है कि वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन से जो है डील करने के लिए वो इको बायो ट्रैप्स लगाएंगे। इको बायो ट्रैप क्या होते हैं? बेसिकली जो फीमेल मस्कीटोज़ हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर स्मॉल बैग जो है जिसके अंदर पानी है और इंसेक्टिसाइड डाला गया है, उसमें जाकर वो एग्स को ले करें। अब उसके अंदर जो अट्रैक्टेंट डाले जाते हैं उससे जो है वो फीमेल मस्कीटो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर जाके अपने एग्स को ले डाउन कर देती है उस पर्टिकुलर बैग में जिसमें पानी है और ये इंसेक्टिसाइड है। उससे क्या होता है कि वो मस्कीटो के एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो है आपकी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस रुक जाती हैं। क्या क्यों? क्योंकि आपका वेक्टर अपने मस्कीटो की ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो है वो पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सब से जो है वो कॉज होती हैं। खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में लगभग 7 लाख डेथ जो हैं वो हर साल रिपोर्ट की जाती हैं इन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, स्किस्टोमाइसिस, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रेपानोसोमाइसिस। ये सारी डिसीज़ से जो है ये 7 लाख डिजीज जो है डेथ्स हर साल रिपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थ्रिसुर पूरम। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फेस्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं थ्रिसुर पूरम की।
कोडियत्तम के साथ। ऑफ कोर्स ये थ्रिसुर पूरम केरला में सेलिब्रेट होता है मंथ ऑफ मेदम, जो आपके अप्रैल मई के पीरियड में आता है। ये मदर ऑफ ऑल पूरम्स भी कहा जाता है। ग्रैंड असेंबली ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस है थ्रिसुर में। और ये ब्रेन चाइल्ड किसका है? राजा राम वर्मा जी का, जो कि सक्तन थम्पुरन भी कहा जाता था उनको, महाराजा ऑफ कोचीन थे ये। और ये वदक्कुन्नाथन टेम्पल के आसपास जो है ये पूरा जो है फेस्टिविटीज़ चलती हैं। शिवा को ओबिसेंस दी जाती है, मैसिव परेड निकाली जाती है, और 7th डे पर जो है वो ये कम जो है कल्मिनेट होती है ये पूरी जो है जो सेलिब्रेशन, जिसको हम पकल पूरम भी कहते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is vibrant villages program. This topic is important for your governance section and your economy section and your security section also. So central government's ambitious program, vibrant villages program, which is meant to develop infrastructure and open up villages to tourists along the China border, has now will be of course integrated with the PM Gati Shakti master plan. So what is vibrant village program? So this was announced in Union Budget 2022-2023, and the aim is to enhance infrastructure in villages along India's border with China, in states like Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, and Arunachal Pradesh. The activities will include, of course, creation of infrastructure, providing direct-to-home facility, establishment of road connectivity, and providing assistance for livelihood generation. So 4,800 crore rupees have been allocated for this project for the next few years, and it is being implemented by Home Ministry. What is PM Gati Shakti? So this was announced by PM Modi in 2021, and it is basically providing a digital platform where 16 ministries, including railways and roadways, come together and integrate their planning and coordinate implementation of infrastructure connectivity projects. It will also consist of multimodal connectivity, so it will provide last mile connectivity of infrastructure to reduce travel time for people. And under this project, under this PM Gati Shakti master plan, 100 lakh crore worth of projects have been identified, which includes 11 industrial corridors, 38 electronic manufacturing clusters, and 109 pharma clusters by 2024-2025. So So the targets up to 2024-2025 have been fixed for all infrastructure ministries. So who is the implementing agency? National Networking Group is of course implementing this entire project, which consists of experts and officials from all the stakeholder departments. So the next topic is Swamitva scheme. So this topic is again important for your governance and economy topic both. So recently, Uttar Pradesh state government has completed distribution of 55 lakh plus Gharanis, that is the rural house records, under the Swamitva scheme. So this scheme is a central sector scheme which was launched in 2021 to give ownership of property in rural inhabited areas by mapping land parcels using drone technology. So Survey of India is also participating in it. So this drone technology and mapping is being done with assistance from Survey of India, and record of rights are given to village household owners. So this entire scheme is being implemented by Ministry of Panchayati Raj, State Revenue Department, State Panchayati Raj Departments, and Survey of India. So full coverage of nearly 6.62 lakh villages in India will be done, and extensive CORS network will be made. So what is CORS network? So basically it's called the continuously operating reference stations, which provides regional positioning service. So in case there is a need for correction in a map, then to find that very accurate positioning, this CORS network which is nearby is contacted, and it helps us to achieve centimeter level accuracy positioning. Okay, so the next topic is Operation Kaveri. This topic is important for your security and international relations topics both. So recently, India has launched Operation Kaveri to evacuate to its nationals from conflict-torn Sudan. So this will consist of bringing back Indian citizens. About 4,000 of them are stranded in Sudan. Two C-130 aircraft and one Navy ship is on standby to evacuate Indian citizens. So what is the need of evacuation? Because there is a conflict there. Country's army paramilitary group is fighting with the paramilitary or RSF. Then of course it has led to
several civilian deaths also. So that's why, of course, uh, what is the cause of conflict? So there is has to be a transition towards a civilian government, which the existing military is resisting. So that's why there has been a conflict, and we have to understand what is Sudan or where is Sudan. So it is a northeastern African country. So we have to check the location in the map. It is bounded on the north by Egypt, east by Red Sea, Eritrea, Ethiopia, on the south by South Sudan, on the west by Central African Republic and Chad, and on the northwest by Libya. Its capital is Khartoum, and Arabic is the primary language of Sudan. So the next topic is ULPIN. So this topic is important for your governance section. Rural Development Ministry has recently said that ULPIN has been adopted by 26 states and union territories so far. So unique land parcel identification number is part of Digital India Land Records Modernization Program. It is also called the Bhu Aadhaar, in which 14-digit identification number is allocated to a land parcel to prevent land fraud. Basically, every surveyed parcel of land will be given this number, and land records which have become outdated and disputed, of course, will be also be covered. The identification will be based on longitude and latitude coordinates. It will compile every detail, and different properties from across the country will be covered. So basically, it's a single authoritative source of truth for information. So just imagine, once this project will be completed, there will be no need of any land dispute, because it will conclusively prove the identity of the land. So, what is the Digital India Land Records Modernization Program? It's a central sector scheme being implemented by the Ministry of Rural Development. The attempt is to build upon the commonalities that exist in arena of land records. It will integrate data from banks, financial institutions, circle rates, registration offices, and other sectors, and compile it in a computerized format. So the next topic is exercise in AUKUS 223. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has announced that they will be participating in exercise in AUKUS 23 in Greece. So it's an annual multinational air exercise hosted by Hellenic Air Force, that is the Greek Air Force, and it is based on the single base concept, in which the entire exercise takes place from a single air base, that is the Andhra Vida Air Base in Greece. So it is conducted in a realistic combat scenario, and apart from India and Greece, US, France, Italy, Jordan, and Saudi Arabia are also participating in this exercise. So the next topic is osteoarthritis. This topic is important for your social issues. Scientists have recently developed a new injectable cell therapy to treat osteoarthritis. So it's a degenerative joint disease which affects many tissues of the joint, and it refers to biomechanical changes within a joint, and it occurs when the protective cartilage within the that is cushioning the two joints wear down over time, and it affects generally the knees, hands, hips, and spine. It develops as people age, and it gets worse slowly over time, and it includes pain, stiffness, tenderness, etc. Currently, there is no cure for it, but of course, pain is managed throughout the time, and in as a matter of last resort, the damaged joint has to be surgically fused or replaced. So the next topic is eco-biotraps. This topic is important for your environment section. Recently, it has been decided by BMC that to prevent the spread of vector-borne infections, a project called eco-biotraps will be launched, which will consist of an eco-friendly trap, which will be consisting of certain attractants, and which will attract female mosquito to lay eggs in its water. So this will be made from recycled cardboard, and it will be basically a small bag which will consist of normal water and this mixture of attractant and insecticides. So what will happen is, the female mosquito will be attracted towards it, and it will lay down its egg in this water, which will also consist of this attractant and insecticide, and this insecticide will destroy the mosquito eggs. That's how you will be able to control the mosquito population. So
Vector-borne diseases are very dangerous because they are caused by parasites, viruses, and bacteria. They are high. They are reported in tropical and subtropical areas, and more than 7 lakh deaths are reported from this vector-borne diseases. So the next topic is Thrissur program. This topic is important for your art and culture section. Recently, the festivities of famous Thrissur program began with Kodiyattam, which is the ceremonial flag hoisting, and at the participating temples. So Thrissur Puram is celebrated in Kerala in the month of Medam, that is in between the period of April to May, and it is considered to be the mother of all Purams. It is celebrated in the grand assembly of gods and goddesses in and around Thrissur. It was the brainchild of Raja Ramavarma, who is famously known as Saktan Thampuran, who is the Maharaja of Cochin. It is centered on the Vadakunath temple, and these temples pay obeisance to Shiva, the presiding deity. So a massive parade is planned on temple grounds, and on the seventh day, the event culminates into and all in this way. This event culminates, and it is often referred to as Pakal Puram. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.